Welcome, lovely people. My name is Jaspreet Singh, a Techie Explorer. Welcome back to my channel. This is the very first episode for Windows Server Administration. इसमें हम बात करेंगे एक लैब सेटअप करने के लिए जिसमें हम विंडोज सर्वर्स के बारे में सीखेंगे क्या क्या हमें करना पड़ता है. सो अगेन एज अ सेट कि हमें प्रिपरेशंस क्या क्या करनी पड़ेगी, तो उसमें हमें एक चाहिए कि टाइप टू हाइपरवाइजर, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर जिस पे हम वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल करेंगे. क्योंकि मैं एक अपने सिंगल लैपटॉप पे आई कैन नॉट रन मल्टीपल ओएस साइमल्टेनियसली. मतलब कि एक साथ में एक से ज़्यादा ओएस नहीं चला सकता. बट व्हेन आई इंस्टॉल अ हाइपरवाइजर, टाइप टू हाइपरवाइजर स्पेसिफिकली, जैसे कि Oracle वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware वर्कस्टेशन, मैं एक से ज़्यादा VMs इंस्टॉल कर सकता हूँ, उसको रन कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, एंड वी कैन हैव मल्टीपल सिनेरियोज वर्क. सो Type 2 hypervisor is basically a software that is installed on an operating system, जैसे कि Windows client machine पे. एंड इट कुड बी एनी ऑफ द बिलो सॉफ्टवेयर. मैंने कुछ फ्री सॉफ्टवेयर लिख दिए, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ Oracle वर्चुअल बॉक्स कर रहा हूँ. द सेकेंड थिंग दैट वी नीड इज़ अ विंडोज सर्वर ISO. हम इवेल्युएशन वर्जन पे जाएंगे बिकॉज ये मेरी एक लैब है, सो नॉट लाइव सेटअप, सो वी डोंट नीड एनी लाइसेंसेज और परचेज एज ऑफ नाउ. बट येस, आपको वो सारी फंक्शनलिटी देखने के लिए मिलेगी जो आप लाइव पे करेंगे. Alright, let's move to my desktop. Let's do some deployment. Alright, thank great. Let's go ahead. Alright, welcome to my desktop. अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, Oracle वर्चुअल बॉक्स डिप्लॉय करना है. तो मैंने अपना क्रोम खोल रखा है. यहाँ पे मैं सर्च करूँगा Oracle virtual box. So that's pretty much the virtual box that we need. सिंपल सा है, क्लिक एंड डाउनलोड. ओके, हमें विंडोज़ होस्ट के लिए चाहिए, तो हमने विंडोज़ ओएस विंडोज़ होस्ट सेलेक्ट किया है, उस पर क्लिक कर दिया है, एंड इट हैज स्टार्टेड डाउनलोडिंग. So let's wait for it to complete quickly and we'll come back in a short while. Alright, so जब हमारा वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो चुका है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डाउनलोड इज विंडोज OS. तो मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 इवेल्युएशन एडिशन. तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की खुद की साइट है एवोल्यूशन सेंटर. आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू लॉग इन विद योर रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी. एक ISO कर सकते हैं, वर्चुअल लैब कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ISO कर रहा हूँ. I'll put in my name. Okay, there is यहाँ पे मैं डालूंगा टेस्ट कंपनी साइज. just put in anything that you need. and continue. यहाँ से आपको पूछेगा किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, सो आई चूज इंग्लिश एंड द डाउनलोड हैज स्टार्टेड. जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है. जब तक ये डाउनलोड होगा तब तक हम अपना वर्चुअल बॉक्स सेटअप करते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप. जस्ट क्लिक ऑन द सेटअप, रन द फाइल, it would start running. Next, I'll change the drive to D drive, that has much more space. Okay, next we'll not change anything. Warning, network interfaces. It will install a networking feature. तो वो अपना खुद का एक इंटरफेस लॉन्च करेगा ताकि वर्चुअल मशीन्स आपस में कनेक्ट हो पाए. The next is installation beginning.
Oracle VirtualBox UAC completed and it's installing. इसका एक अपना खुद का ड्राइवर था, तो आई selected it as install क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूँ, so I know what the steps are. Alright, so installation is finished. We can start the VirtualBox just by clicking a finish button. It will automatically pop up a screen with the VirtualBox running. Okay, as you can see, I have some tools here. So we can set up the preferences. Machines मैं add कर सकता हूँ, नई बना सकता हूँ, import कर सकता हूँ कोई appliance. A lot of things can be done, right? Preferences में हम जाके देखेंगे एक बार, हमें कुछ change वैसे करना नहीं है, but again जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए एक, मेरे डी ड्राइव में जाएंगे सारे VMs. नेक्स्ट इनपुट के लिए इनके शॉर्टकट्स है, अपडेट, लैंग्वेज इंग्लिश, display automatic, network. I would add a network, that is a NAT network. आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, DHCP सपोर्टेबल होगा, किस पर्टिकुलर VLAN से IP जाएंगे, या फिर मैं कहूँ कि इसका CIDR क्या होगा. पोर्ट फॉरवर्डिंग आप सेट कर सकते हो इन केस अगर आप नेटिंग कर रहे हो, तो I'll just click on OK. Proxy or direct proxy, direct connection to the internet. I'll choose direct connection to the internet because I don't have any proxy in place as of now, and we have saved the settings and we are good to go. Oracle VirtualBox हमारा set हो चुका है. The next thing that we need right now is to have this ISO ready. Before that, I just need to confirm you one thing. आप अपने BIOS में जाके भी ये चेंजेस कर सकते हैं. Task Manager पे जाइए, go to Performance, and you have an option for virtualization that is enabled. That is available in your BIOS advanced settings. आपको ये enable रखना पड़ेगा ताकि आप virtualization के features use कर सकें अपने किसी भी client machine पे. आप ये desktop हो सकता है या laptop हो सकता है. So let's wait for the ISO to complete and we'll come back again. Alright people, so we have successfully downloaded the Windows Server ISO. अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, हम इंस्टॉलेशन आपको पहले दिखा चुके हैं एंड सिर्फ हमें इस ISO को इंपोर्ट करना है एंड इट विल बी अ नॉर्मल इंस्टॉलेशन जैसे आप विंडोज़ OS करते हैं अब तक. एंड इन केस कभी किसी ने नहीं किया तो ऑफ कोर्स यू कैन गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो. मैं वैसे भी शो करने वाला हूँ कि हाउ आई एम गोना इंस्टॉल दिस विंडोज सर्वर ISO. बट बिफोर आई डू दैट मेरे को बस आपको ये दिखाना है कि वी हैव डन सम डिप्लॉयमेंट्स कि हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पे जिसमें कुछ ड्राइवर्स थे उसके नेटवर्क के एंड सपोर्टेड ड्राइवर्स. अभी ISO इंस्टॉल करने वाले हैं. ISO इंस्टॉल करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं किसी भी OS के. तो पर्टिकुलर फॉर विंडोज सर्वर 2016 इसको 512 MB रैम चाहिए, 32 GB की डिस्क चाहिए एंड सम प्रोसेसर. So processor is all good. We are all good with RAM and disk space as well since it's gonna be a thin mode installation. तो हम आपको दिखाते हैं पहले कैसे करना है. So details it will be coming up live जैसे कि हम इंस्टॉल करेंगे. So अगेन हम वर्चुअल बॉक्स पे जाएंगे अपने. ओके यहाँ पे मशीन, तो यहाँ पे हम गए विंडोज -DC01 जस्ट इन केस अगर दूसरी पुरानी करे पर कभी. तो ये हमारा 2016 सर्वर है. आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में आपके पास ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे जिस पे आपको ट्रबल शूटिंग करनी है, जिस पे भी आपको अपना लैब बनाना है. यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर वर्जन. सो व्हाट इट डज इज बेसिकली दिस टूल इटसेल्फ नोज कि हम किस टाइप को OS डाल रहे हैं. सो इट द डिवाइसेस एंड द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स मच मोर कंपैटिबल. ओके, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट फॉर द एक्सपर्ट मोड जहाँ पे आप मेमोरी साइज, वर्चुअल डिस्क कैसे होगी, कैसे आपको ऐड करनी है नहीं करनी है, एंड एवरीथिंग कैन बी डन. सो it would be a guided mode for me as of now. It is Windows DC01 and it is a Windows 2016. I'll go for next. अभी ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको
RAM कितनी देनी है, that is 2048. I can create a virtual hard disk. Normally its recommended size is 50 GB. It will create a 50 GB of hard disks. And we can also wish to not to create a hard disk, also wish to use an existing hard disk in case we had a VM. So it would be a virtual hard disk, VHD. Next, it will be dynamically allocated. So यहाँ पे dynamically और fixed का मतलब ये होता है कि dynamically में आपका जो size है वो as per usage grow करेगा. So a dynamically allocated hard disk will only use space on your physical hard disk as it fills up. And a fixed sizes, it actually takes the complete space, and which is much more faster for the systems, but again it takes up all the space that you allot to a virtual machine. So आपके पास अगर disk की कमी है, so of course go for the dynamic one, that would be much better. So मैं dynamic ले रहा हूँ क्योंकि मेरा personal laptop है, don't have much space. यहाँ पे again देख सकते हैं कि virtual hard disk का जो size chunk है, file data chunk है, वो कितना होगा. It has been set. And create. तो क्रिएट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है. वर्चुअल मशीन की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं. आई जस्ट नीड टू गो फॉर द सेटिंग्स. मुझे कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है. और यहाँ पे एक ओके यहाँ पे मुझे स्टोरेज ऐड करनी है. एक ISO होगा. I can use anything. I can use a particular optical drive from a disk, or I can choose a disk file. तो अभी मैंने डाउनलोड किया है एक disk file. I'll choose that. It is hot pluggable. It's and we can add much more drives. अभी हमने एक VHD ऐड किया, हम चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं. You can see I can add n number of devices, all type of supportable devices that you want. एडवांस्ड में जाके शेयर क्लिपबोर्ड हम एनेबल कर देंगे. ड्रैग एंड ड्रॉप्स, डिस्क्रिप्शंस, डिस्क इंक्रिप्शन अगर आपको लगाना है. सर I'm not changing all those things that are much more detailed, and I'm just gonna click on start. So what it'll do is it will pop up a window with this machine powered on, and I can control the machine like I'm using a normal server on a console. So here it is, our console. यहाँ पे virtual machine start होगी, and we can see everything that is going to go ahead. So it will be a normal installation. As I told you, Windows files load हो रही हैं. It's gonna capture all my clicks. अगर आपको बाहर आना है तो control enter, sorry control alt. somehow मेरे सिस्टम पे control alt नहीं चल रहा है, तो it's okay, not a challenge. वैसे मुझे नहीं करना है. Okay, it has moved out since the machine has started, so mouse pointer integration is done. So basically क्या हुआ कि now since the VirtualBox knows that this particular virtual machine is running a Windows OS, it integrated the mouse, and whenever I move on the console, it works inside the console, and I'll try to move out and I can work on my machine. So let's go for the installation. It's pretty simple. Next, install now. We'll just maximize it for no other reason. You can set up the screen size once the installation is done. By default it's taking its required size. Alright, so I want to install which type of copy. So it would be a standard evaluation. Accepted. This is the basically terms and conditions for using this operating system. I can always choose a custom install and an upgrade. So it's a custom install. The disk drive appeared. Next, and the installation started. So let's keep this running for a while, and once it is done, we'll be back on the screen.
Alright people, this installation is completed successfully. As you can see, the virtual machine reports or the guest OS supports mouse pointer integration. So when I say mouse pointer integration, you remember that I was switching to console and then to my screen while moving my mouse. So this is done when you have an integration within OS that is running virtually. So again, so it is very much recommended that you select the correct OS. Alright, so it took some amazing time, but yes, we are done. So it's in nano mode, I believe. We're gonna activate the features later, but right now it's asking me the user's password must be changed before login. I say okay, and the password should be say mhm, mhm, changing password. Unable to meet the length, have to use some tricky password. Alright, changing password again. Let's see. Okay, the password has been changed, so make sure that you have a okay password. The logon UI is done again, and we are at the show startup. It's personalizing some settings. So here we are ready on our server. Like we are on PowerShell, we can just complete type in PowerShell. That will help us switch to the PowerShell mode, and there we can install rest of the features. If you want, I can show it to you, but let's keep that for another video. Thank you very much. So this is a normal VM installation. Any lab can be prepared with this, and you can use your own laptop and desktop. See you soon in another video. Ta-da, take care, bye bye. Yeah, take care.